Assalamu alaikum. Hello and welcome back to another exciting video on CS circuit. Well, this video is about computer science grade 9 and we are discussing unit number 1 computer systems. So here we have lecture notes. जैसे कि आप सब जानते हैं कि चैप्टर 1 चूँकि बहुत लेंथी है तो इस वजह से जो है वो चैप्टर 1 के लेक्चर नोट्स को ऑलमोस्ट 5 to 6 वीडियोस में जो है वो डिवाइड किया गया है, ठीक है. So you have to watch this video till end to understand each and every topic. And if you find this video helpful, then do not forget to like, share, and subscribe as well. Alright, so topic is registers. अच्छा, बेस्ट पार्ट जो वीडियो का है वो ये है कि लाइक हर एक लेक्चर के साथ हर एक टॉपिक के साथ उससे रेलिवेंट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी कंसीडर किया गया है, ठीक है. और बेसिकली इस टॉपिक से आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, आपके एमसीक्यूज, टॉपिक से रेलिवेंट और लॉन्ग क्वेश्चन भी आपका कवर हो जाएगा, ठीक है. सो रजिस्टर्स का जो पहला क्वेश्चन है, इट इज़ व्हाट काइंड ऑफ डेटा इज स्टोर्ड इन रजिस्टर्स. How do registers help in the CPU work faster? And why are registers important for processing instructions? Basically, registers are small fast storage area inside the CPU, ठीक है, जो कि डेटा को टेम्परेली स्टोर करते हैं ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम, ठीक है. अब जो डेटा जो क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉरी जो क्वेश्चन नंबर 1 है कि किस तरह का जो डेटा है वो स्टोर किया जाता है रजिस्टर्स में, तो इट्स बीइंग like numbers being calculated, memory addresses और control signals. ओके, रेगुलर मेमोरी की तरह लाइक रजिस्टर्स जो है वो दे आर मच फास्टर एंड लोकेटेड डायरेक्टली इन द सीपीयू, ठीक है. जो प्रोग्राम है उनकी एग्जीक्यूशन इसके थ्रू फास्ट होती है, ठीक है. बाय होल्डिंग डेटा दैट द सीपीयू इज़ करंटली यूजिंग, रजिस्टर हेल्प द कंप्यूटर कंप्लीट टास्क क्विकली एंड एफिशिएंटली. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज़ मेमोरी हायरार्की. Question number 1 is, why do computers have different types of memory instead of just ones? How does memory hierarchy help a computer run faster? What are the levels in memory hierarchy and how are they different? Why is some memory faster but smaller while other memory is slower but larger? Okay, so basically these are four important questions relevant to this topic. मॉडर्न कंप्यूटर्स मेमोरी हायरार्की बेसिकली इसलिए यूज़ करते हैं ताकि डेटा ट्रांसमिशन की स्पीड को इंक्रीज़ किया जा सके, ठीक है. इट यूजली इंक्लूड्स रजिस्टर्स. सो रजिस्टर्स आर बेसिकली फास्टेस्ट बट स्मॉलेस्ट. कैशे मेमोरी इज़ फास्ट एंड स्लोज टू द सीपीयू. रैम मेन मेमोरी विद सुपर स्पेस बट स्लोअर. एंड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस जैसे कि हार्ड ड्राइव्स हैं, ठीक है, उसमें ये इट्स बेसिकली लार्जर बट स्लोएस्ट. The memory hierarchy makes computer efficient by balancing speed and storage, allowing the system to run faster and handle larger amounts of data. Okay. Next topic is instruction cycle, pipeline processing in parallelism. बेसिकली ये जो कंसेप्ट है ये यूज़ किया जाता है कंप्यूटर में फॉर फास्ट प्रोसेसिंग. ओके, सो इससे रेलिवेंट जो क्वेश्चंस हैं, व्हाट इज़ द इंस्ट्रक्शन साइकिल इन अ कंप्यूटर, हाउ डज पाइपलाइन प्रोसेसिंग मेक अ कंप्यूटर वर्क फास्टर, व्हाट इज़ पैरेललिज्म एंड व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट इन प्रोसेसिंग डेटा. Alright, instruction cycle is the process that the CPU follows to carry out each instruction in a program. इसमें जो steps हैं, it's fetching, decoding and executing, ठीक है. Fetching means getting the instruction, decoding means understanding it and executing the task. Then we have pipeline processing. Basically, modern CPUs use pipeline processing to increase efficiency. ओके, मल्टीपल प्रोग्राम्स जो है वो मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को एक साथ रन किया जाता है, ठीक है, सेम टाइप पे, इससे सेम टाइम पे, और इससे भी जो है वो एग्जीक्यूशन जो है वो फास्ट होती है, ठीक है. पैरेललिज्म इज़ व्हेन द कंप्यूटर यूजेस मल्टीपल सीपीयूज टू हैंडल मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली. ओके, basically, the instruction cycle, pipeline processing, and parallelism make computers faster and more efficient by making sure different instructions can be worked on at the same time. Okay. Next topic is interrupt and I/O. What is interrupt in a computer and why it is important? How does interrupt help the CPU handle input and output devices? Why does a computer use interrupts when working with I/O devices?
इंटरप्ट बेसिकली वो सिग्नल होता है जो कि आपका जो करंट प्रोग्राम जो आप यानी कि रनिंग में होता है, ठीक है, उसको बेसिकली उसको कुछ टाइम के लिए जो है वो स्टॉप कर देता है कोई इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन या जो है वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है। इट्स लाइक अ कीबोर्ड और प्रिंटर नीड्स अटेंशन. When an interrupt happens, the CPU pauses its current task, take care of the request from IO device, and then goes back to what it was doing. Okay. This system helps the CPU respond quickly to different devices and make sure all parts of the computer work smoothly together. Next topic is memory terminology. What is a bit and how does it relate to digital information? What is a memory word and why is it important in computers? What does word size mean and how does it affect a computer's performance? Bit is basically the smallest unit of data in a computer, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बाइनरी डिजिट से 0 and 1. Byte consists of 8 bits and it is used to represent a single character like a letter or number. Memory word is a group of bytes that the computer can process at once, और इसका जो size है it can vary like 8, 16, 32 or 64 depending on the computer's architecture. And word size indicates how much data the computer can handle at once, which affects its speed and efficiency. Okay. Next topic is memory build-up and retention power. Question number 1 relevant to the topic is what is chip memory and where is it commonly used? How does magnetic memory work and what devices use it? What is optical memory and how does it store data? Alright, so chip memory refers to memory that is made of small computer chips. It basically uses in devices like smartphones and laptops. Magnetic memory uses magnets to store data on devices like hard drives and floppy disks. And optical memory uses light to read and write data on disks like CDs and DVDs as well. इनमें जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि लाइक हाउ दे स्टोर डेटा, ठीक है। चिप मेमोरी जो है वो फास्ट है लेकिन एंड कम्पैक्ट है, लेकिन इसमें जो मैग्नेटिक मेमोरी है इट्स बेसिकली यूज टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एंड इट इज़ गुड फॉर स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा. And optical memory is used for media storage. Okay, some devices prefer chip memory for its speed and size, while others might use magnetic or optical memory for different storage purposes. नेक्स्ट टॉपिक इज़ मेन मेमोरी, रैम, रोम एंड कैशे. इनमें हम बेसिकली इसका डिफरेंस देखेंगे और कैशे मेमोरी क्या है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। रैम एज यू नो इट्स रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, एंड इट्स टेम्परेरी स्टोरेज एरिया. और जब आपका कंप्यूटर सडनली कोई इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ हो जाए या कोई पावर फेलियर कुछ इस तरह का अचानक से बंद हो जाए तो बेसिकली जो डेटा होता है वो रैम में रिमूव हो जाता है, ठीक है. On the other hand, read-only memory stores important instructions permanently, ठीक है, even when the computer is power off. Cache memory is a small high-speed memory located inside or very close to the CPU, ठीक है. It's basically helping to speed up access to frequently used data. RAM is volatile and ROM is non-volatile memory. Alright, so next topic is software and hardware engineering. How does the hardware engineering differ from software engineering? Why is it important for software and hardware engineers to work together? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अगर हम देखें तो इसका जो प्रोसेस है इट्स ऑफ डिज़ाइनिंग, डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड एप्लीकेशंस and like such as games or websites. Okay, and on the other hand, hardware engineering focuses on physical parts of a computer like the motherboard, CPU, and other components that make up the device. Software engineers basically create things like applications, games, operating systems, while hardware engineers works on building and improving the actual hardware. It's important for both types of engineers to work together because software needs hardware to run and hardware needs software to function properly. Alright, so next topic is operating system, device drivers and utilities. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है, डिवाइस ड्राइवर्स क्या हैं और डिवाइस ड्राइवर्स को अपडेट करना क्यों ज़रूरी है. Operating system is basically the interface between
computer user and computer. Basically, interface is the way of interactive interaction between computer. सो ऑपरेटिंग सिस्टम्स की अगर हम एग्जांपल्स देखें, विंडोज़, लिनक्स, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके. Device drivers are special programs that help the operating system communicate with the hardware devices like printers, keyboards, and graphic cards. They act like translators between the OS and the hardware. And utilities software includes tools that manage, maintain, and control computer resources like antivirus programs and disk cleanup tools. इनको अपडेट करना इसलिए ज़रूरी है कि ताकि आपका जो सिस्टम है वो स्मूथली वर्क कर सके, ठीक है. All right, thank you. So that was all about this video. And if you find this video helpful, then do not forget to like, share and subscribe as well. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.